Hi friends, today we are discussing 5th standard Fitzroy Readers Extensions Story 21 into C. The story living on Puddle Farm. And kindly type in YouTube search at the rate of Historia Vijay Kumar for getting my YouTube channels, improving spoken English for children's interview choirs and college students. English, the story living on Puddle Farm. Living on Puddle Farm. When I was little, we lived in an apartment. Then my dad got a job on a cattle farm. I never liked the apartment. So I was glad when dad got that job and we started living on the farm. It's called Puddle Farm. There's lots of land with several big paddocks for all the cattle. There are 7 farm dogs, a flock of chickens and a pony as well. In the middle of the farm, there is a little wooden house. It has a bedroom for mom and dad, and a bedroom for my sister Ella and me. The dogs, the chickens and the pony live in a small paddock by the house. In the middle of the farm, there is a little wooden house. It has a bedroom for mom and dad, and a bedroom for my sister Ella and me. The dogs, the chickens and the pony live in a small paddock by the house. We like all the animals, but best of all we love the black farm dog, Bessie, and the pony, Chester. Chester was a present from mom and dad to Ella and me. We play with Chester whenever we can. To begin with, we brush him. He likes it when we brush his back and legs. But the best spot is at the bottom of his neck. Then we saddle him up, so I can go for a ride. It is so much fun to sit in the saddle and ride Chester across the farmland. Chester and I go splashing in the dam, and trotting under the gum trees. My little sister Ella is just 6. She is a bit too small to ride Chester by herself. So, when she wants to have a ride, I hold on to Chester with a rope. Then I say to Ella, "Are you ready? Are you holding on?" If Ella says yes, I run next to her, holding the rope. When Chester trots, Ella goes bump, bump, bump and starts to giggle. When we finish the ride, we get the saddle off and give Chester a big rub. We tell him he is a good pony and let him nibble on an apple or a carrot. Then we let him off his rope. He loves to gobble up as much apple and carrot as he can, but we must not let him get too fat. If Chester does get too fat, he may develop a hoof problem. Then he will hobble or have to stand still.
Mom and Dad try hard to look after all the farm animals so that they stay well. But if an animal does get sick, we get the vet to check them. The vet helps sick animals to get better. Bessie is the farm's best cattle dog. In spring, Bessie had 11 pups. We let her look after her pups in the house. For weeks, she lay in her box and they drank milk from her. Bessie had to rest a lot. She was not strong. We wanted to get help for Bessie, so we called the vet. The vet checked Bessie, then they had a cuddle. She said that Bessie will get well. But we must give her plenty of good food and rest. The pups got bigger and wanted to play. They left their mom's box. Stumble, wobble, tumble, bump, all the way across the room. It was so funny looking at them play. When they are big, the pups will be good farm dogs just like their mom. Eller and I will miss them so much when they have to go to different farms. But that is what cattle dogs do. Luckily, we will still have Bessie and Chester here with us on Puddle Farm. हिंदी। पुडल फार्म पर रहना। जब मैं छोटा था, हम एक अपार्टमेंट में रहते थे। फिर मेरे पिताजी को एक मवेशी फार्म पर नौकरी मिल गई। मुझे अपार्टमेंट कभी पसंद नहीं था, इसलिए जब पिताजी को वह नौकरी मिल गई और हम फार्म पर रहने लगे, तो मुझे खुशी हुई। इसे पुडल फार्म कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी जमीन है और सभी मवेशियों के लिए कई बड़े बड़े बाड़े हैं। यहाँ 7 फार्म कुत्ते, मुर्गियों का झुंड और एक टट्टू भी है। खेत के बीच में एक छोटा लकड़ी का घर है। इसमें माँ और पिताजी के लिए एक बेडरूम है और मेरी बहन एला और मेरे लिए एक बेडरूम है। कुत्ते, मुर्गियाँ और टट्टू घर के पास एक छोटे से मैदान में रहते हैं। हम चेस्टर के साथ खेलते हैं जब भी संभव हो। सबसे पहले हम उसे ब्रश करते हैं। जब हम उसकी पीठ और पैरों को ब्रश करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन सबसे अच्छी जगह उसकी गर्दन के नीचे है। फिर हम उसे काठी पर बिठाते हैं ताकि मैं उसे घुमाने जा सकूं। काठी पर बैठकर चेस्टर को खेत में घुमाना बहुत मजेदार है। चेस्टर और मैं बांध में छप छप करते हैं और गम के पेड़ों के नीचे टहलते हैं। मेरी छोटी बहन एला सिर्फ 6 साल की है। वह चेस्टर को अकेले चलाने के लिए थोड़ी छोटी है, इसलिए जब वह सवारी करना चाहती है तो मैं चेस्टर को रस्सी से पकड़ लेता हूँ। फिर मैं एला से कहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम टिकी हुई हो? अगर एला हाँ कहती है तो मैं रस्सी पकड़कर उसके बगल में दौड़ता हूँ। जब चेस्टर दौड़ता है
तो एला टकराती है, टकराती है, टकराती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब हम सवारी पूरी कर लेते हैं तो हम चेस्टर की काठी उतार देते हैं और उसे अच्छी तरह से सहलाते हैं। हम उसे बताते हैं कि वह एक अच्छा टट्टू है और उसे सेब या गाजर खाने देते हैं। फिर हम उसे रस्सी से उतार देते हैं। उसे सेब और गाजर जितना हो सके उतना खाना पसंद है, लेकिन हमें उसे बहुत मोटा नहीं होने देना चाहिए। अगर चेस्टर बहुत मोटा हो जाता है तो उसे खुर की समस्या हो सकती है। फिर वह लंगड़ाकर खड़ा हो जाएगा, या फिर उसे बहुत ज्यादा चर्बी नहीं होगी। माँ और पिताजी खेत में रहने वाले सभी जानवरों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वे स्वस्थ रहें। लेकिन अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो हम उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं। पशु चिकित्सक बीमार जानवरों को ठीक होने में मदद करता है। बेसी फार्म का सबसे अच्छा मवेशी कुत्ता है। वसंत में बेसी के 11 पिल्ले हुए। हमने उसे घर में अपने पिल्लों की देखभाल करने दिया। हफ्तों तक वह अपने बक्से में लेटी रही और पिल्ले उससे दूध पीते रहे। बेसी को बहुत आराम करना पड़ा। वह ताकतवर नहीं थी। हम बेसी के लिए मदद चाहते थे, इसलिए हमने पशु चिकित्सक को बुलाया। पशु चिकित्सक ने बेसी की जांच की। फिर उन्होंने उसे गले लगाया। उसने कहा कि बेसी ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें उसे भरपूर खाना और आराम देना चाहिए। पिल्ले बड़े हो गए और खेलना चाहते थे। वे अपनी माँ के बक्से से बाहर निकल आए, लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए, लुढ़कते हुए, टकराते हुए, पूरे कमरे में घूमते रहे। उन्हें खेलते हुए देखना बहुत मजेदार था। जब वे बड़े हो जाएंगे तो पिल्ले अपनी माँ की तरह ही अच्छे खेत के कुत्ते होंगे। एला और मुझे उनकी बहुत याद आएगी जब उन्हें अलग अलग खेतों में जाना होगा। लेकिन मवेशी कुत्ते यही करते हैं। सौभाग्य से हमारे पास अभी भी पुडल फार्म पर बेसी और चेस्टर हैं। जब वे बड़े हो जाएंगे तो पिल्ले अपनी माँ की तरह ही अच्छे खेत के कुत्ते होंगे। एला और मुझे उनकी बहुत याद आएगी जब उन्हें अलग अलग खेतों में जाना होगा। लेकिन मवेशी कुत्ते यही करते हैं। सौभाग्य से हमारे पास अभी भी पुडल फार्म पर बेसी और चेस्टर हैं। And fill each gaps below. Use the words from the story. First one. Your answer is this. When I was a little, we lived in an apartment. B. We play with chesters whenever we can. Third one. We let him nibble on an apple or a carrot. D. Bessie is the farm's best cattle dog. E. In spring, Bessie had 11 pups. F. The pups got bigger and wanted to play. Here the questions. Here is the answers.
How did she feel about moving to the farms? She was glad and happy to move to the farms because she never liked the apartment. Second questions. What is their farmhouse like? It is a little wooden house with a bedroom for mom and dad and a bedroom for a girl and her sisters Ella. Question number 3. Who are their favorite animals? Answers. Their favorite animals are the black farm's dog Bessie and the pony Sister. Where does sisters most like to be brushed? The sisters most like to be brushed at the bottom of his neck. Fifth questions. Where does the big sisters ride sister? She rides sisters across the farmland in the dam and under the gum trees. Question number 6. Does Ella ride sisters by herself? No. Answer is no. The Ella is too small to ride sisters by himself, so her sisters hold on to sisters with a rope and runs next to her. 7th one. What does Ella do when sisters trots? The Ella goes bump, bump, bump and starts to giggles. Question number 8. What might happen if sisters get too fat? If sisters get too fat, he may develop a hoop problems and will humble or have to stand still. Question number 9. Where does Bessie look after her pups? Bessie looks after her pups in the house, lying in her box. Question number 10. What will the pups do when they are big? When the pups are big, they will go to different farms and become good farms dogs like their mom. And thanks for watching video. If any doubt means put the comment box and thanking you. For further contact us I have given the details and thanks once again. If any doubt means put the comment box. Kindly subscribe the channel.